हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने लास्ट टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लायबिलिटीज और एसेट्स आइटम जनरेट करके उन्हें रीअसाइन किया था। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस सेट करना है, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आइटम जनरेट करेंगे एंड देन उसको रीअसाइन करेंगे। साथ में जाते हैं। Now select profit and loss, then click on create item, enter name, revenue and expenses, then click on continue button. Now select revenue and then click on create item. So enter the item, that is sales on commission, exchange rate gain, cash discount gain, gain from currency valuation, clearing gain from currency transaction, and lastly revenue allowed differences GL clearing. Then click on continue button. Now select expenses and click on create items. Enter details, purchases, utilities, bank expenses, administrative expenses, operative expenses, cost of sales, exchange rate loss, cash discount, expenses or loss, loans from currency valuation, and clearing loss from currency translation. Now click on continue button. Again select expenses and click create item and enter expenses allow differences GL clearing. Now click on save button, then click on save. तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस।